Hello students, welcome to my channel Smart Vidyarthi. In this video, we will discuss class 10 mathematics chapter 1 exercise 1b question number 4 part 2 means v double I 2x double I. ठीक अच्छे तो फर्स्ट क्वेश्चन जो देजी हमर कौन देजी ना 5/x plus y minus 2/x minus y plus 1 is equal to 0 and second equation जो देजी हमर 15/x plus y plus 7/x minus y minus 10 is equal to 0. तो दीटांग आमर लिनियर इक्वेशन फॉर्मेट रे नहांती तो ताको आम लिनियर इक्वेशन फॉर्मेट रे फास्ट आनिबा तो तापरे ताको सॉल्व करिया. तो लिनियर इक्वेशन फॉर्मेट को आनिया गले एठी 1/x plus y और 1/x minus y को आज्यूम करिया पड़िबो गोटे p आ गोटे q काहे कि ना दीटांग केस इक्वेशन 1 रे 1/x plus y अछि इक्वेशन 2 रे भी 1/x plus y अछि आ इक्वेशन 1 एठी 1/x minus y अछि आ इक्वेशन 2 रे भी हमर 1/x minus y अछि. तो से जो दीटा कॉमन जिंस अछि से गुडा को हमें p आ गोटा को q आज्यूम करिवा. लेट अस assume that 1/x plus y is equal to p and 1/x minus y is equal to q. The equation 1 becomes 5p minus 2q plus 1 is equal to 0. Equation 2 becomes 15p plus 7q minus 10 is equal to 0. तो मु इक्वेशन 3 और 4 को एलिमिनेशन मेथड बा अपसरण पद्धति रे सॉल्व करी. तुमको जो पद्धति रे सुविधा हो से पद्धति रे सॉल्व करि परिबो. तो एठी हमर p को एलिमिनेट करबा. एठी p रो कोएफिशिएंट अछि 5 एठी p रो कोएफिशिएंट अछि 15. तो इक्वेशन 3 रे हमें 3 मल्टीप्लाई करबा बाय मल्टीप्लाइंग 3 in equation 3 whole into 5p minus 2q plus 1 is equal to 3 into 0. That implies 15p minus 6q plus 3 is equal to 0. Equation 5. तो इक्वेशन 4 रे हमर 15p अछि इक्वेशन 5 रे भी 15p हे गला किंतु दी जनकर साइन कोन अछि ना पॉजिटिव अछि. यदि साइन सेम थो ताल सब्ट्रैक्शन करा हो. इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 5. तो इक्वेशन 4 रे हमर कोन अछि 15p plus 7q minus 10 is equal to 0. 15p minus 6q plus 3 is equal to 0. तो जेहेतु सब्ट्रैक्शन करा होछि अगर साइन चेंज हो जियो माइनस प्लस 15p minus 15p कैंसल 7q plus 6q 13q minus 10 minus 3 minus 13 is equal to 0. That implies 13q is equal to 13. That implies q is equal to 13 divided by 13. That implies q is equal to 1. By putting the value of q in equation 4, 15p plus 7q minus 10 equal to 0. That implies 15p plus 7 into q रो वैल्यू 1
minus 10 is equal to 0. That implies 15p minus 3 is equal to 0. That implies p is equal to 3 by 15. That implies p is equal to 1 by 5. आम p को 1 by x plus y एज्यूम करते एंड q को 1 by x minus y एज्यूम करते तो p is equal to 1 by 5. That implies p रो वैल्यू केते 1 by x plus y is equal to 1 by 5. That implies x plus y is equal to 5. Equation 6. Similarly q is equal to 1. That implies q को हम एज्यूम करते 1 by x minus y तो 1 by x minus y is equal to 1. That implies x minus y is equal to 1. Equation 7. तो इक्वेशन 6 और 7 y रो कोएफिशिएंट समान अछि आउ दीटांग हमर कोन अछन अपोजिट साइन अछन तो से दीटांग ऐड हबो ऐड करले हमर y टा कैंसिल हो जिवो तो बाय एडिंग इक्वेशन 6 and 7 सॉरी एटी p x plus y थिला हमर 1 by 5 सॉरी ठीक अछि x plus y is equal to 5 x minus y is equal to 1 plus y minus y cancel that implies 2x is equal to 6 that implies x is equal to 6 by 2 that implies x is equal to 3. By putting the value of x in equation 6 x plus y is equal to 5 that implies x value 3 plus y is equal to 5 that implies y is equal to 5 minus 3 that implies y is equal to 2. Therefore xy is equal to 3 and 2. Next question, xy by x plus y is equal to 6 by 5. That means cross multiplication करदेला हो 6 whole into x plus y is equal to 5 into y. That is 6x plus 6y is equal to 5xy. Equation 1. And second one जो देज xy by y minus x is equal to 6. That implies 6 whole into y minus x is equal to xy. That is 6y minus 6x is equal to xy. तो आमर जो दीटांग इक्वेशन रहला दीटांग लिनियर इक्वेशन फॉर्मेट रे ना दे ताको फास्ट लिनियर इक्वेशन फॉर्मेट को आनिबा तापर जेकी सॉल्व करबा ठीक अछि बा ताको जदी एलिमिनेशन मेथड रे करिया को चाहिबो भी करि परिबो किंतु टिके कॉम्प्लिकेटेड हो काहे ना एटी xy टर्म अछि ताको एलिमिनेशन तो xy टर्म को फास्ट एलिमिनेट करबा तो xy टर्म को एलिमिनेट करिया भले फास्ट हम कोन करिया पड़िबो ना xy बोथ ऑफ साइड रे डिवाइड करिया पड़िबो ठीक अछि by dividing xy in both sides. Six x by xy plus 6y by xy is equal to 5xy by xy. xy cancel, y cancel, x cancel. That implies 6 by y plus 6 by x is equal to 5. Equation 3. By dividing xy in equation 2 we have equation 2 thila amara 6y by 6y by xy minus 6x by xy is equal to xy by xy. That implies y cancel, x cancel, xy cancel. 6 by x minus
6 by y is equal to 1 इक्वेशन 4 तो ये इक्वेशन 1 ने ये रहा 6 by y ये माइनस 6 by y अच्छी तो अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करवा तो ये दीटाक 1 by y रो कोफिशिएंट जी अच्छे गोटे 6 अच्छे गोटे -6 अच्छे कटिज 1 by y टा एलिमिनेट हो तो आमर केवल वेरिएबल रही 6 by x बा x टा आमर वेरिएबल तो ये एलिमिनेशन मेथड यूज करके y को टर्मिनेट कर तो बाय एडिंग इक्वेशन 3 and 4 इक्वेशन 3 हो 6 by y plus 6 by x is equal to 5 इक्वेशन 4 हो हमर -6 by y plus 6 by x is equal to 1 plus 6 by y minus 6 by y कैंसल हो गला एट रहा के 6 by x plus 6 by x is equal to 6 that implies LCM है x 6 plus 6 12 by x is equal to 6 that implies x is equal to 6 by x is equal to 12 by 6 that implies x is equal to 2 by putting the value of x in equation 4 तो इक्वेशन 4 था आम कहते -6 by y plus 6 by x is equal to 1 that implies -6 by y plus 6 by x value हमारा 2 वाला is equal to 1 that implies -6 by y plus 3 is equal to 1 that implies -6 by y is equal to 1 minus 3 that implies -6 by y is equal to -2 that implies y is equal to -6 by -2 that implies y is equal to 3 therefore xy is equal to 2 3 नेक्स्ट क्वेश्चन जो देजी 6x plus 5y is equal to 7x plus 3y plus 1 is equal to 2 whole into x plus 6y minus 1 तो आमको फास्ट इक्वेशन दीटा कैलकुलेशन करिया पड़ियो आ बाहर करिया पड़ियो तापर जाई सॉल्व करिया ठीक अछि फर्स्ट 6x plus 5y is equal to 7x plus 3y plus 1 that implies 7x minus 6x plus 3y minus 5y plus 1 is equal to 0 that implies सबू जाक मु राइट हैंड साइड को नहीं गली तो 7x रू 6x गले x माइनस 3y रू 5y गले 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 सिमिलरली 7x plus 3y plus 1 is equal to 2 whole into x plus 6y minus 1. 7x plus 3y plus 1 is equal to 2 whole into x plus 6y minus 1. That implies 7x plus 3y plus 1 is equal to 2x plus 12y minus 2. That implies 7x plus 3y plus 1 minus 2x plus 12y minus 2 is equal to 0.
that implies 7x plus 3y plus 1 minus 2x minus 12y plus 2 is equal to 0. 7x minus 2x दीटा सिमिलर टर्म 5x 3y minus 12y ହେଇଗଲା ତମର minus 9y plus 3 is equal to 0. Equation 2. तो इक्वेशन 1 है x minus 2y plus 1 equal to 0 and इक्वेशन 2 है 5x minus 9y plus 3 is equal to 0. तो ये x को एलिमिनेट कले हमको इजी हो कहीं ना ये 1 अच्छे x रो कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट अच्छे 5 तो 5 मल्टीप्लाई करबा हम इक्वेशन 1 ने by multiplying 5 in equation 1 that implies 5 whole into equation 1 हो कहते हैं हमारे x minus 2y plus 1 equal to 0. That implies 5x minus 10y plus 5 equal to 0. Equation 3. तो इक्वेशन 2 जो था 5x minus 9y plus 3 equal to 0. ये इक्वेशन 3 जो आसला 5x minus 10y plus 5 equal to 0. तो ये हमर x रो कोएफिशिएंट जो अछि बोथ ऑफ जगह रे अछि केते 5 अछि आउ दीटा का साइन समान अछि तो साइन इक्वल थले हम कोन करिया पड़ो माइनस करिया पड़ो तो बाय सब्ट्रैक्टिंग equation 3 from 2 तो 2 टा कितना रहला हमरा 5x minus 9y plus 3 equal to 0. 3 रहला हमरा 5x minus 10y plus 5 is equal to 0. तो हमरा एठी सब्ट्रैक्शन कराबो तो साइन चेंज हो गेला plus 5x minus 9x कैंसल minus 9y plus 10y है y 3 minus 5 है गला minus 2 is equal to 0. That implies y is equal to 2. By putting the value of y in equation 3 5x minus 9y plus 3 is equal to 0. That implies 5x minus 9 into y ro value है 2 plus 3 is equal to 0. That implies 5x minus 18 plus 3 equal to 0. That implies 5x minus 15 equal to 0. That implies 5x is equal to 15. That implies x is equal to 15 by 5. That implies x is equal to 3. Therefore x y is equal to 3 2. नेक्स्ट जो इक्वेशन देखिए x plus y minus 8 by 2 is equal to x plus 2y minus 14 by 3 is equal to 3x plus y minus 12 by 11. तो हमको फास्ट इक्वेशन दीटा कैलकुलेशन करिया पड़िबो बाहर करिया पड़िबो तो x plus y minus 8 by 2 is equal to x plus 2y minus 14 by 3. That implies cross multiply कर दवा 3 whole into x plus y minus 8 is equal to 2 whole into x plus 2y minus 14. That implies 3x plus 3y minus 24 is equal to 2x plus 4y minus 28. That implies 3x plus 3y minus 24 minus 2x plus 4y minus 28 is equal to 0. ये टोटल टर्म को लेफ्ट हैंड साइड को नहीं आसली ठीक अच्छे. That implies 3x plus 3y minus 24 minus 2x minus 4y plus 28 equal to 0.
दैट इम्प्लाइज 3x रु 2x कला x 3y माइनस 4y है माइनस y माइनस 24 प्लस 28 है 4 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1. Similarly x plus 2y minus 14 by 3 is equal to 3x plus y minus 12 by 11. तो ए दुटा को इक्वाल कले आउ गोटे इक्वेशन बाहर जीव आमर. Similarly x plus 2y minus 14 by 3 is equal to 3x plus y minus 12 by 11. Cross multiplication करिवा. That implies 11 whole into x plus 2y minus 14 is equal to 3 whole into 3x plus y minus 12. That implies 11x plus 22y minus 154 is equal to 9x plus 3y minus 36. That implies 11x plus 22y minus 154 minus 9x plus 3y minus 36 is equal to 0. A total term को मैं एपट साइड को नहीं आसली. That implies 11x plus 22y minus 154 minus 9x minus 3y plus 36 is equal to 0. That implies 11x minus 9x है 2x 22y minus 3y है plus 19y minus 154 plus 36 is equal to minus 118 is equal to 0. Equation 2. तो आमर इक्वेशन 1 जो रहा x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 एटी अच्छे 2x प्लस 19y माइनस 18 इक्वल टू 0. तो फास्ट रहा x एटी रहा 2x. तो ये एलिमिनेशन मेथड यूज करवा. तो बाय मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन 1 बाय मल्टीप्लाइंग 2 in equation 1. तो 2 whole into x minus y plus 4 is equal to 0 into 2. That implies 2x minus 2y plus 8 equal to 0. Equation 3. तो इक्वेशन 2 रे एठी 2x अच्छी एठी भी 3 रे भी 2x अच्छी. तो दी जनकर आमर साइन कौन अच्छी कोफिशिएंट आउ साइन समान अच्छी. तो आम एठी कौन करवा ना माइनस करवा. 2 रु 3 को माइनस कर कि 3 रु 2 को माइनस कर चलो. बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2. तो इक्वेशन 2 थिला हमर केते 2x प्लस 19y माइनस 118 इक्वल टू 0. इक्वेशन 3 2x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0. तो माइनस कले साइन चेंज हो जिवो. प्लस 2x माइनस 2x कैंसल 19y plus 2y 21y minus 118 minus 8 minus 126 is equal to 0. That implies 21y is equal to 126. That implies y is equal to 126 by 21. That implies y is equal to 6. By putting the value of y in equation 2, 2x minus 2y is equal to minus 8. That implies 2x minus 2 into y रो value है 6 is equal to minus 8. That implies 2x
is equal to minus 8 plus 12. That implies x is equal to 4 by 2. That implies x is equal to 2. Therefore, xy is equal to 2, 6. Next, see x plus y by 2 minus x minus y by 3 is equal to 8, and x plus y by 3 plus x minus y by 4 is equal to 11. तो ये दुईटा को आगे सिंपलेस्ट फॉर्म को आनिबा तापरे सॉल्व करबा. ठीक अछि. x plus y by 2 minus x minus y by 3 is equal to 8. That implies LCM है जो हमारा 6, 3 whole into x plus y minus 2 whole into x minus y is equal to 8. That implies 3x plus 3y minus 2x plus 2y is equal to 48. That implies 3x to 2x gale x plus 5y is equal to 48. Equation 1. Next, x plus y by 3 plus x minus y by 4 is equal to 11. That implies LCM नहीं गला 12, 4 whole into x plus y plus 3 whole into x minus y is equal to 11. That implies 4x plus 4y plus 3x minus 3y is equal to 11 into 12. That implies 4x plus 3x is equal to 7x, 4y minus 3y minus y is equal to 132. Equation 2. तो इक्वेशन 1 ने हमारा x plus 5y is equal to 48 and equation 2 है 7x minus y is equal to 132. तो एठी 5y अच्छी एठी y अच्छी तो मु ए जो इक्वेशन 2 रे y को एलिमिनेट करे बेले 5 मल्टीप्लाई करी काहे ना कोएफिशिएंट समान करियो पड़िबो by multiplying 5 in equation 2. 5 whole into 7x minus y is equal to 5 into 132. That implies 35x minus 5y equation 3. So by adding equation 1 and 3, तो equation 1 इतले कहते x plus 5y is equal to 48. equation 3 है ला हमारा कहते ना 35x minus 5y is equal to 660. Plus 5y minus 5y cancel. That implies 36x is equal to 8. 4 6 10 0 708. That implies x is equal to 708 by 36. That implies x is equal to 18. By putting the value of x in equation 1. equation 1 हमारे कहते थिला x plus 5y is equal to 48. That implies x ର value ହେଲା 18 plus 5y is equal to 48. That implies 5y is equal to 48 minus 18. That implies 5y is equal to 30. That implies y is equal to 30 by 5. That implies y is equal to
6. Therefore, xy is equal to 18, 6. Next question जो देछि x by a equal to y by b and ax plus by is equal to a square plus b square. That implies bx is equal to ay. That implies bx minus ay equal to 0. Equation 1. Second जो रहला सेटा देछि ax plus by is equal to a square plus b square. That implies एटा इक्वेशन 2. तो हमको एठी अछि by एठी अछि ay. तो y के एलिमिनेट करियो हेले दीटांकर कोएफिशिएंट इक्वल करियो पड़िबो. तो बाय मल्टीप्लाइंग b in equation 1, b whole into bx minus ay equal to 0 into b. That implies b square x minus aby is equal to 0. Equation 3. By multiplying a in equation 2. तो इक्वेशन 2 होची केते a whole into ax plus by is equal to a whole into a square plus b square. That implies a square x plus aby is equal to a whole into a square plus b square. Equation 4. तो हमारे इक्वेशन 3 रे y रो कोएफिशिएंट जे रहला सेटा रहला माइनस ab. एटी इक्वेशन 4 रे y रो कोएफिशिएंट रहला प्लस ab. तो इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दबा by adding equation 3 and equation 4. तो इक्वेशन 3 रे हम जो थला सेतला b square x minus aby equal to 0. b square x minus aby is equal to 0. इक्वेशन 2 रे जोटा अछि सेटा होछि हम सॉरी इक्वेशन 5 रे a square x plus aby is equal to a whole into a square plus b square. Plus aby minus aby cancel. लेफ्ट हैंड साइड रहला केते हमरो a square x plus b square x is equal to a whole into a square plus b square. तो एठी x कॉमन पड़ेबो. x कॉमन गले रहला हमर a square plus b square is equal to a whole into a square plus b square. a square plus b square cancel. That implies x is equal to a. By putting the value of x in equation 1. तो इक्वेशन 1 हमर कौन थिला ना bx is equal to ay. ठीक अछि bx is equal to ay. That implies b into x रो वैल्यू होला a is equal to ay. That implies y is equal to ab by a cancel. That implies y is equal to b. Therefore xy is equal to a b.